गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड। English scientist Robert Hooke, he was seeing thin slices of cork under his microscope. He observed that small chambers or tiny boxes were found in that thin slice of cork. He named that chamber or tiny boxes as cell. At that time, he thought that cells are only present in plants and fungi. Now, all the living organisms, whether they are small or they are big in size, all of them, they are made up of a cell. Therefore, cell is a structural and functional unit of life. So as you can see here, ant, butterfly, flower, tree, elephant, human being, all of them, they are made up of cell. Now question is, why cell is called as structural and functional unit of life? Here you know that cell aggregate together to form tissues. Tissues combine together to form organ. For example, your stomach is made up of epithelial tissue, muscular tissue and glandular tissue. Now, different organs, they combine to form a system. For example, your digestive system is made up of stomach, intestine, your mouth. Now these different systems, they work together to form an organism. So that means cell is a basic structural unit. All the organisms, their bodies are made up of cells, because we know that organism contains organs, organ systems, tissues, and all of them, they are made up of cell. Just like brick is a structural unit for making the wall, in the same way the cell is a structural unit of life. All the processes like respiration, excretion, digestion, which are required to sustain life, they are carried out in cell. Thus, cell is a structural and functional unit of life. Now, I will show you the slides in which you will observe the cells in onion peel. Here we cut the onion, we take out the membrane, thin membrane, we place it on slide, then we put a drop of water and a dye, that is methylene blue, with the help of dropper. Then we will put a cover slip and remove all the air, and finally we will view under microscope. If you see it under microscope, you will see the cells like this. You can see the cells are having rectangular shape. In the center, black color nucleus is shown, and big size vacuoles are also observed. Now, cells have different shapes. Some of the cells, they have irregular shape, while others have spherical,
round, elongated, spindle, or highly branched structures. Let us see. The amoeba has an irregular shape. Its shape changes when it approaches towards food, when it catches its food, when it wants to excrete. During division also its shape changes. Similarly, the WBCs present in our body also has irregular shape because this WBC has to pass through blood vessels, fine capillaries, go to interstitial spaces. Thus, its shape is to be flexible. Thus, it don't have any particular shape. It is irregular in shape. Similarly, with nerve cells, these are highly elongated and branched structures. They collect all the informations from each and every part of your body and then send to your brain for control and coordination. Cells, they have different sizes. Most of the cells you can't see with your naked eye. Thus, these cells are very, very small in size. For example, if you observe bacterial cell, it has very small size in range of microns. Micron is 10 raised to power minus 6, while the egg of hen, that is quite big and you can easily see. Similarly, the largest cell is a egg of ostrich as shown in the diagram. Now, if organism body is made up of only single cell, then that organism is called as unicellular organism. For example, amoeba, paramecium, euglena, their body is made up of only one cell, and this single cell perform all the activities which are performed by multicellular organism. तो ये सिंगल सेल ही रेस्पिरेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, मूवमेंट भी करेगा, कैप्चरिंग ऑफ फूड भी करेगा, सब काम ये सिंगल सेल ही करेगा. तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल के बने हों उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सिमिलरली human beings, butterfly, plants, cat, dog, their body is made up of trillions of cells. Thus, we all are multicellular organism. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो हैं जिनकी बॉडी में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं. नाउ सी एनिमल सेल. ईच cell, whether it is plant cell or animal cell, some common features are there in them. For example, all of them, they have cell membrane. All of them, they have nucleus, cytoplasm, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi bodies. We will discuss them one by one. First of all, we will discuss the cell structure. Cell is composed of two parts, cell membrane and protoplasm. Cell membrane is a outer covering of cell in case of plants as well as in case of animals. It is very thin and delicate membrane. It is semi-permeable membrane which is made up of lipids and proteins. अब क्वेश्चन आता है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते क्या हैं. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होते हैं जो कुछ चीज़ों को अंदर आने दें पर कुछ चीज़ों को अंदर आने या बाहर जाने ना दें. जैसे अगर आपकी छोटी सी खिड़की है
तो उसमें से छोटी छोटी चीज़ें अंदर आ सकती हैं, बाहर जा सकती हैं, पर बहुत बड़ी चीज़ें उनमें से अंदर और बाहर नहीं जा सकती। तो आपकी खिड़की क्या हो गई? सेमी परमिएबल। या आपके आटा छानने वाली जो छलनी है, दैट इज़ आल्सो सेमी परमिएबल। वो फाइन पार्टिकल्स को तो पास होने देगी, पर बिग पार्टिकल्स को पास होने नहीं देगी। इन द सेम वे the cell membrane or the plasma membrane is semi-permeable. It selectively allows few particles to pass through them. Now question is, what are their functions? The first function is it allows the movement of mineral, water and different substances into and outside the cell. तो अलग अलग मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो सेल के अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंड फंक्शन इज इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर. एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करेगी. एंड द थर्ड फंक्शन इज इट कीप्स द कंटेंट ऑफ सेल इनसाइड. जो भी आपका साइटोप्लाज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, उसको सेल के अंदर ही रखने का काम ये करेगा. नाउ द प्रोटोप्लाज्म. बट बिफोर डिस्कसिंग द प्रोटोप्लाज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस सेल वॉल, which is a protective layer outside the plasma membrane in case of plants. तो प्लांट्स के केस में क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और प्रोटेक्टिव वॉल होती है, दैट इज सेल वॉल. इट इज़ डेड. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स. इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज़ फुली परमिएबल. फुली परमिएबल का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ इसके अंदर जा सकती है या बाहर आ सकती है. नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर इट्स फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज इट helps in maintaining the shape of cell. It gives a particular shape to the cell. Second, it allows exchange of material inside and outside the cell. And third is it provides mechanical support to the cell. For example, if there is climatic change, जैसे बहुत गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से विंड फ्लो कर रही हो या आपकी रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो भी आप देखते हैं कि जो आपके प्लांट्स हैं वो सरवाइव करते हैं. क्यों? बिकॉज सेल वॉल प्रोटेक्ट दैट सेल. अदरवाइज इन एडवर्स कंडीशंस द सेल में कोलैप्स. नाउ वी विल डिस्कस ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग component of the cell. It is made up of cytoplasm and different organelles. Cytoplasm is a jelly type material which is present in the cell. It contains different organelles, and the first organelle that we will discuss is nucleus. Nucleus is normally located in center of the cell इन केस ऑफ एनिमल सेल. पर प्लांट सेल्स में नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है. दिस न्यूक्लियस हैज़ 4 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड इज न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ इज न्यूक्लियर मटेरियल. लेट अस सी द फिगर ऑफ दिस न्यूक्लियस. द आउटरमोस्ट double membrane structure, which is shown in dark blue color, that is nuclear envelope. This nuclear envelope separates nucleoplasm from the cytoplasm, and this nuclear envelope is ruptured by means of certain pores which are called as nuclear pores. And through these nuclear pores the substances can either go to cytoplasm or the material can enter from cytoplasm to the cell. Dark color body, circular body that you see in this nucleus is nucleolus.
It contains RNA and proteins. Thread-like structure that you see here is nuclear material. This nuclear material is thread-like when cell is not dividing. It is called as chromatin material. But at the time of cell division, this chromatin material condenses, छोटा होना शुरू हो जाएगा, and it form chromosomes, which are made up of two things. One is DNA and second is protein. This DNA has certain segments which are called as genes, which are responsible for hereditary characters. आपने देखा होगा कि आपके बालों का रंग, आपकी हाइट आपके पेरेंट्स से मिलती है. क्यों? क्योंकि आपके जीन्स और पेरेंट्स के जीन्स में कुछ रिजेम्बलेंस है. तो इसका मतलब आपके पेरेंट्स से जो क्रोमोसोम्स आए हैं, दे हैव सर्टन जीन्स, और उन्हीं जीन्स के अकॉर्डिंगली आपकी हाइट, आपका कलर, आपकी हेयर ग्रोथ, इवन आवाज़ भी आपकी कभी कभी मिल जाती है. तो जो बेसिकली दो फंक्शंस है न्यूक्लियस कर रहा है. फर्स्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और दूसरा काम ये क्या कर रहा है? दूसरा काम ये कर रहा है इन कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ सेल. तो सेल में क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? अब प्रोटीन सिंथेसिस हो या रुक जाए, कौन से मटेरियल अंदर आए, कौन से बाहर जाएं, ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको कौन देगा? न्यूक्लियस. अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, which helps in synthesis of protein with the help of ribosomes, and finally it transport these proteins. Golgi body is another organelle which packs these proteins, etc. Next is vacuole. Vacuoles, in case of plant cell, it is generally large in size, and very big, large size single vacuole is present. But in case of animal cell, this vacuole is small in size and they can many in number, and their main function is to provide support to make the cell rigid in case of plant cells, and in case of plant as well as in case of animal cell, it also stores nutrients and waste material. Next organelle is ribosomes. These are protein factories. That means they synthesize proteins. और एक और ऑर्गेनेली जो आपके सेल्स में होती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, which is called as powerhouse of the cell. Normally animal cell have abundant of mitochondria, but in case of plant cells their number is fewer. तो प्लांट सेल में कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और एनिमल सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. और इन माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP. There are two types of cell. One is called as prokaryotic cell and second is called as eukaryotic cell. Those cells in which the nuclear material, that is chromatin material, is without nuclear membrane. These cells are called as prokaryotic cells. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में होंगे? बैक्टीरिया में होंगे और ब्लू ग्रीन एल्गा में होंगे. तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि इनका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है. और दूसरी बात, इसके आसपास कहीं पे भी न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है. और तीसरी बात, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की क्या डेफिनेशन हो गई? These are the cells in which the nuclear material is without nuclear membrane. और अगर न्यूक्लियर मटेरियल के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा
तो हम उसे बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल. फॉर एग्जाम्पल, ऑल द सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, रैट, कैट, अनियन, your plants, they are eukaryotic in nature. Now the difference between prokaryotic and eukaryotic cell is, prokaryotic cells are generally small in size, while eukaryotic cells are comparatively big in size. Second difference is, prokaryotic cells have chromatin material without nuclear membrane, that is, nucleus lacks nuclear membrane, while in case of eukaryotic cells, nucleus has nuclear membrane. And the third difference is, the chromosome in case of prokaryotic cell is circular and usually single, while in case of eukaryotic cell, normally there are many chromosomes and these chromosomes are linear in shape. Last organelle that we will discuss is plastids. Plastids are double membrane organelles which are present in cytoplasm of only plant cells or in blue green algas. तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर है लीव्स का, या रेड कलर है फ्लावर्स का, या पिंक कलर है आपके पेटल्स का, वो किस कारण से? दैट इज़ ड्यू टू प्लास्टिड्स. तो 3 तरह के प्लास्टिड्स की बात करेंगे. वन इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज़ ल्यूकोप्लास्ट एंड थर्ड इज़ क्रोमोप्लास्ट. Therefore, chloroplast is a plastid which contain green color pigment called as chlorophyll, and this chlorophyll helps in synthesis of food. तो जितने भी आपने प्लांट्स देखे होंगे ज़्यादातर हरे हैं, ग्रीन हैं. वाई? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल. और ये क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में, विच इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट, whose main function is to store food like starch, like carbohydrates, like proteins, lipids, etc. And third type of plastid, which is responsible for different colors to fruit, leaves, flowers, they are called as chromoplast. तो आपके जो फ्लावर्स हैं रेड, मैजेंटा, ब्लू, येलो, वाइट, ये डिफरेंट कलर्स के हैं. दैट इज़ ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट. नाउ द डिफरेंस और द कंपैरिजन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल. द फर्स्ट डिफरेंस इज, एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल while plant cell have cell wall. Second difference is, animal cells are generally round or irregular in shape. Plant cells are generally rectangular in shape. Third is, animal cell have small and many number of vacuoles. Plant cell have generally one large vacuole. Next difference is, plastids are absent in animal cell while it is present in plant cell. Mitochondria are very few in plant cell, but animal cell they contain large number of mitochondria. That is all for today. Thank you very much and have a nice day.